The first step towards any change is awareness, and the second step is always acceptance. This has been the motto and the driving force of our team, the Spectrum Autism. Good evening and welcome to another session of Talk to the Expert series. I'm Lavanya and I'll be your host for tonight. And joining us today is Dr. Babita Gupta. Dr. Babita Gupta is a consultant rehabilitation psychologist come project leader at Dia Foundation, a vocational center for differently abled people. She is also a consultant psychologist at Medray Hospital and Diagnostic Affair Clinic, having a total experience of over 19 years in this field. She specializes in child and adolescent mental health issues, individual and family counseling, with an objective to implement the principles of physiotherapy, psychotherapies, in bringing about a holistic development. She is an inspiration to many. She applies a comprehensive approach or a combination of therapies on a case to case basis. She also loves traveling, listening to music, and reading. It's a pleasure to have her join us together on this session tonight by Spectrum Team Autism. We aim at sensitizing communities for better inclusion and creation of awareness and acceptance in social circles. So let's welcome tonight Dr. Babita Gupta. Very good evening, Lavanya. Very good evening, Doctor. How are you doing? Yeah, fine, thank you. So can we set this session rolling? Yes. The first question that I'm going to ask you is, you are associated with different, centers, hospitals, diagnostic clinics, and you're doing your work as a consultant psychologist in this field, which is comparatively a new one, which is a psychotherapy field. So can you take us in this journey of yours and let us know, how important it is for you to be on this journey? Yeah, sure, Lavanya. So initially, when no, I took a subject psychology in my master's graduation, and it's a just part of subject only, not a kind of any. No, I to have an aim for the to become a psychologist or something to come in this field. Just as a subject, I took it, and gradually I developed the interest and passion in the clinical psychology and the rehabilitation psychology. And gradually, I came in this field, and I found myself like very blessed to be part of mental health area and deliver my services to the diverse group of children and adolescents and adult group as well. So, like you've said, there's always a difference in various groups, in various people, different cultures. So, how do you feel this particular field of yours helped in, better inclusion or celebrating our differences? Yeah. So the first thing what I found when we deal with the children or the adults for adult groups, so very important things we feel like self acceptance in terms of what I am and what I can do and how others are perceiving me. So when we have this kind of balancing concept in all these three things, then we can deal with the children as well as the adult group and elderly group. So very important things which we work like no as also already you mentioned like case to case basis. So I find very important to understand the person, what the person is, and what the person likes, interest, strength, and limitations. Accordingly, we work individual basis. True. So, when the first step is to self accept yourself, once you have done that, and once you've set an example in your own house, it's easy for others to follow. So, that Yes. is what, to sum up your sentence, means, I think. Moving on to the next question. Whenever we talk about mental illness, it is a sensitive topic and it is an equally delicate situation, both for the caregivers as well for the caretakers. How important is it to address any mental issue
which is faced by a young adult when done along with parents. दैट इज माता पिता के साथ मिलकर एक युवा द्वारा सामना की जाने वाली किसी भी मानसिक बीमारी के मुद्दे को संबोधित करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? या तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को या एडल्ट्स को, ऐसा नहीं है कि हमेशा भी कंसीडर द बच्चे को ही प्रॉब्लम। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच फैमिली मेंबर्स आल्सो नीड टू लुक इनटू दैट पार्ट, लाइक टू देयर ओन बिलीव्स, देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, देयर ओन पर्सनालिटी। सो वो सभी जब हम पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स अंडरस्टैंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि उनका जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है वो मैच नहीं हो पाती हैं बच्चे के साथ में या बड़ों के साथ में। जब वो मैच नहीं है, वहां कहीं बैलेंस नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं या इमोशनल प्रॉब्लम्स है, वो आनी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। तो वहां पर हमको एज अ फैमिली क्या करना है, कुछ अभी क्या है, पहले तो जॉइंट्स फैमिली होते थे तो काफी सारी चीजें प्रॉब्लम आती भी थी, बच्चे सीखते भी थे, एडल्ट्स भी सीखते थे कि कैसे प्रॉब्लम को कोप अप करना है। बट एक सोसाइटी में चेंज आया है कि अभी न्यूक्लियर फैमिली काफी है होती जा रही है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो गैप की वजह से लर्निंग स्किल्स है बहुत काफी कम आते जा रहे हैं। और कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं बच्चों में या बड़ों में, कोपिंग स्ट्रेटेजीज को अगर हमें डेवलप करना है, तो मेंटल इलनेस है या मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, वो बहुत अच्छे से कोप अप हो सकते हैं। चाहे स्ट्रेस का ले लीजिए, डिप्रेशन है, एग्जाइटी है, कोई भी इश्यूज है, या स्पेशल नीड पर्सन है विद स्पेशल नीड, जो हम फील करते हैं वो भी वही फील करते हैं। उनकी इमोशंस है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, काफी हद तक सिमिलर है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कोपिंग स्ट्रेटेजीज में, उनके सीखने के थोड़े से तरीके में, क्योंकि उनका लर्निंग प्रोसेस थोड़ा कम है। या मेंटल इलनेस की बात करें तो हम उनको किस तरीके से चैनलाइज किया जाए, वहां पर हमारे पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल है कि उसको कैसे क्रिएटिविटी में लाया जाए, कैसे चैनलाइज किया जाए। वो कैसे पॉसिबल है? जब तक फैमिली मेंबर्स आगे आए और अपने आप को अपग्रेड करें। थेरेपिस्ट हैं या सेंटर्स हैं, जो भी जहाँ भी जिस तरह का रिहैबिलिटेशन जरूरत है या उनको वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, तो वहां पर उनके साथ कोलैबोरेट करके आगे बढ़े। टाइम टू टाइम जब स्टेप्स और फॉलो अप करेंगे, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती जाती है। और एक चीज और है, हमें समय के साथ चलना चाहिए। पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उस समय में क्या जरूरत है और उसको किस तरीके से डाइवर्ट किया जा सकता है। अगर समय के आगे ज्यादा वरी लेंगी कि आगे चल के क्या होगा, कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगी, वहां पर फिर काफी और सारी नेगेटिव थॉट्स काफी जनरेट होते हैं और फिर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो समय को देखें कि उस प्रेजेंट मोमेंट में बच्चा या मैं क्या कर सकती हूँ एज अ मदर, एज अ फादर, उस प्रेजेंट सिचुएशंस को हम कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, देन फैमिली मेंबर्स कैन आल्सो कोप अप एंड द पर्सन कैन आल्सो कोप अप विद द सिचुएशन वेरी वेल। मतलब अगर खुद की मानसिक संतुलन, अगर खुद का मानसिक संतुलन ठीक रहे, तभी हम जाके अपने बच्चों का देख पाएंगे। अगर हम खुद स्ट्रेस लें या अगर हम खुद उस एंग्जाइटी में रहें कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो उस दौरान या उस स्ट्रेस में शायद हम आज के वर्तमान के जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक से देख ना पाए। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव मेंशन्ड हियर कि वर्तमान की स्थिति को देखो, भविष्य को बाद में देखा जाएगा, कि मानसिक संतुलन को बनाए रखना अत्यधिक आवश्यक है। सो दैट इज, आई फील, इट्स फॉर एवरीबडी, especially in situations like you've said, when we are staying in a nuclear family, when there's not much communication, like when there are a lot of people in the house, and the child also gets to open up and be around. So in nuclear families, maybe that doesn't happen, or we allow the stress and anxiety factor to affect us a lot.
So I think this is a very important thing that Dr. Babita has said, that all of us should imbibe in our day-to-day life, whether dealing with a neurodivergent or a neurotypical, and for our own respite care also. So, Babita ji, moving on, of course, this leads to the importance of family counseling sessions, right? So, उस हिसाब से अगर मैं पूछूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो हम साइकोथेरेपी बोल रहे हैं, आप जो बता रही हैं, what is psychotherapy? And is it like something which is going to help us all, or is it only going to help a particular section of people who need it more? या कहीं ऐसा है कि ये थेरेपी हम सभी इस्तेमाल कर सकते हैं? So is it something like that? हाँ, तो जब हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं तो बेसिकली साइकोथेरेपी इज अ kind of systematic and scientific approach which we can say to bring the change in behavior and the thinking process. So psychotherapies hum in general for so called normal people also can use those techniques. अब स्ट्रेस मैनेजमेंट है तो स्ट्रेस तो सभी को होता है, तो वहां पर भी साइकोथेरेपीज की जो बिहेवियर टेक्निक्स हैं आप वो यूज कर सकते हैं। डिप्रेशन है तो डिप्रेशन को भी हमको समझना पड़ेगा। हर कोई आज कह देता है कि मुझे डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन हर किसी को एक क्लिनिकल फॉर्म में वी नीड टू अंडरस्टैंड। सैडनेस हमको होती है, तो इमोशंस जो है हमारे डे टू डे लाइफ में काफी ऊपर नीचे होते हैं। कभी हमको अच्छा भी लगता है, कभी थोड़ा सैड भी फील करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई क्लिनिकल ही प्रॉब्लम हो रही है या ज्यादा काफी दिनों तक हो रही है या काफी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। डेफिनेटली हमको एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए। इन जनरल अगर हम साइकोथेरेपीज को समझने के लिए कोशिश करें तो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो जैसे मैंने अभी कहा कि सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच है, अगर हम उसको यूज करते हैं किसी भी पर्सन विद स्पेशल नीड है, या जैसे हम छोटी छोटी चीजें हम कुछ चीजें तो हम घर में ही अपने डेली रूटीन में ही यूज करते हैं। जैसे आपको कोई कुकिंग सीखनी है या आपको ड्राइविंग सीखनी है, आप जनरली क्या करते हैं? आप यूट्यूब पे, आज के टाइम में तो यूट्यूब है, या पहले के टाइम में जैसे आप पेरेंट्स से कुछ कुछ सीखते थे, आप नोट नोट लिखते थे कि पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, इतना सामान लगेगा, आप पहले से उसको ला के रख लेते हैं या उसको डिवाइड करते हैं। तो ये सारा तरीका आप अननोइंगली कर रहे हैं ऑलरेडी। यही तरीका हम साइकोथेरेपी में एक सिस्टमेटिक तरीके से यूज करते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से उसका पूरा मेथड की पहले कैसे हुआ, बाद में कैसे हुआ, क्या क्या उसकी डिफरेंट फॉर्म है, तो वो तरीके हो जाते हैं। तो हर कोई व्यक्ति, चाहे बच्चा है या एडल्ट है या स्पेशल नीड है या डिप्रेशन या एग्जाइटी या क्लिनिकल फॉर्म में उनको कोई मेंटल इलनेस है, साइकोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव systematic way to change and bring the positive change in behavior and thinking process. So psychotherapy is very important when we deal with any kind of issues. So, and it can be used for everybody, especially for the people who are differently abled. क्योंकि उनके इमोशंस को संभालना या उनके इमोशंस को या उनके परसेप्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए भी this will help us a lot. And yeah, it's very good thing that you told us, Babita ji, because even I'm very guilty of that. Is we use terms without knowing their clinical meaning. So हमें इतनी आदत है डिप्रेशन शब्द को इस्तेमाल करना, is like, we keep using it. Yes, I'm depressed whenever I feel sad or a bit down. And yeah, we find our younger ones also who have started using it without knowing. Of course, when there is a genuine issue, we do need to take it up with a qualified person for the same. But other than that, I think most of us will be guilty of that. I'm definitely guilty for one. So I think we should refrain from that. So having said that, if I go on to the next question, as a parent of any parent, for example, especially that of a special needs child, I'm more worried about what the future holds for my child and how will I go about with the vocational training for my child.
So, in your session, the one thing that stands out is the family members also get, an insight, an enriching experience. So, आप please हमें बता सकती हैं कि individual sessions or family sessions में कैसे, मतलब how do you go about it? क्या होता है एक session में? What's your approach? And how does it benefit a special needs child? And how does it benefit the parents also of their child? ओके, सो लवनीय जी, जैसे आपने पूछा, तो मुझे लगता है कि व्हाट जनरली वी फॉलो एज अ प्रोफेशनल, जब भी कोई बच्चा है या कोई भी बड़ा विद स्पेशल नीड्स, जब वो हमारे पास आते हैं विद सम काइंड ऑफ इश्यूज इन टर्म्स ऑफ कि उनको स्पीच से रिलेटेड है या बिहेवियर में कुछ डिफरेंट बिहेवियर है या हाइपर एक्टिविटी है, कुछ भी है, जो भी है, जब बच्चे आते हैं तो हम उनको पहले अ, उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस, या किस तरीके से कुछ गेम्स देते हैं बच्चे को, कि किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से खेल रहे हैं, तो एक हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। फिर हम दूसरा जिसको हम केस हिस्ट्री बोलते हैं, उसमें बच्चे की डेवलपमेंटल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री वगैरह लेते हैं। फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, पेरेंट्स का क्या परसेप्शन है, कितना टाइम पेरेंट्स बच्चों के साथ में स्पेंड करते हैं, या उन लोगों का रिलेशनशिप कैसा है, कितना इंटरेक्शंस रहता है जब वो केस हिस्ट्री है। या कुछ प्रॉब्लम हमने ये देखी है कि घर में होती है लेकिन बाहर सेटिंग में बच्चा अच्छा है, या बाहर सेटिंग में बच्चे को थोड़ा तकलीफ है, मिंगल नहीं हो पा रहा है, घर में ओके है, तो वो सारा इंफॉर्मेशन हम लोग केस हिस्ट्री में पूरा इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद में वी गो विद द टेस्टिंग, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, कि कई बार ऐसा हमने भी देखा है कि ये आपका परसेप्शन भी हो सकता है कि बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है या बच्चा इस तरह से बिहेव करता है, रियल में वो जो प्रॉब्लम है या इश्यूज है वो इतने कितने हद तक प्रॉब्लमेटिक है, या सिचुएशनल ओरिएंटेड है, या इन्वायरमेंट में ही अ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कुछ एक जन के साथ में, एक एक व्यक्ति के साथ में प्रॉब्लम होती है लेकिन दूसरे के साथ में बहुत अच्छा है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है उसको। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, इंफॉर्मेशन है, जब हम वो लिखने के बाद में साइकोमेट्रिक असेसमेंट है, या आईक्यू का है, या एसएलडी है, लर्निंग प्रॉब्लम है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स है और किस हद तक है, माइल्ड में है, मॉडरेट में है, या उसके साथ में कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, वो हम सारा साइकोमेट्रिक असेसमेंट करते हैं। उसके बाद में देन वी गो फॉर द इंटरवेंशंस वी डिसाइड बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव इंटरवेंशन, क्योंकि all areas are very important, developmental areas that we say, social, because and that all are interrelated basically। अभी बच्चे को अगर सोशल में प्रॉब्लम है, मिंगल नहीं हो रहा है, तो वो घर में ही है तो आइसोलेट फील करेगा तो उसका लोनलीनेस रहेगी, तो वो इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इमोशनल मैकेनिज्म को किस तरीके से इम्प्रूव करना है, स्पीच की, अगर अगर हो सकता है कई बार ऐसा होता है बच्चे को स्पीच की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से वो सोशल सेटिंग में नहीं मिंगल कर पा रहा है, तो वो भी आपको देखना है एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट। तो स्पीच का है या ऑक्यूपेशनल है, तो वो सभी का प्लान बना के देन वी गो विद दैट व्हाट काइंड ऑफ इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट प्रायोरिटी, और बिहेवियरल, इमोशनल, एंड एज वेल एज द पेरेंटल काउंसलिंग, पेरेंटल ट्रेनिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बच्चा जो है या पेरेंट्स हैं, दे ऑल्सो गो, कहीं ऐसा नहीं हो सकता ना कि बच्चा आपके पास में 1 साल, 2 साल, 3 साल आ रहा है, ठीक है, देर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल crisis or limitations. If the child, the parents are coming last for many years, there are two ways. One thing is that there is a improvement. Another thing is you are making more dependent rather than empowering them. So what I am trying with the family session, and in my sessions, I empower the family members. I try to educate the strategies what I am doing with the client or the child, so that they can work and they can continue those things at home, and then their skill will build up. So in family sessions, we try to, in like Dia Foundation, we
do the family session second and fourth Mondays on different topics, so that family members will get more awareness and education, and it's more kind of sharing by different parents, and they share like what kind of strategy works, not work, and then it will benefit all the parents. Yeah. So, before I go to summarize what Dr. Babita has said, let me inform our viewers. If you have any questions, you can post it in our comment section and we will take it up as the session moves on. Babita ji, if I have to summarize, so it was a very comprehensive way of evaluation. To be honest, it's a combination therapy where the child is assessed first and then he is evaluated on various parameters. The combination of therapies are actually taken into consideration and worked out what will work best for the child in that particular scenario that the child is taking into factor his environment, his ambience, his situation at home and at the playground or at the school. So everything is considered, and then I think the family is also brought into the picture. A beautiful way, a line which stood out with Babita ji was that we empower the family, we don't make them dependent. And I think that's a tremendous thing to do. That's a very important thing to do, because a lot of families may not have the financial backing to take forward the treatment or the therapies for a longer duration, and this really helps the families come together as a supportive structure and also work towards empowering each other so that they are able to handle the situation if need be in a very independent way. So I think that's a very amazing thing that you do here, Dr. Babita. So, the next question is there any app or any interactive games that you would like to recommend, considering that this particular segment of our children are adolescent? So, they're slightly older when we are doing the vocational training. They love the visual way of learning. So, would you recommend any interactive apps, visually beneficial apps for our children in this particular session of yours? I would say physical games would be good. It more kind of no, it's a two-way interaction among the person with the social setting. Though now it's like online scenario and online settings is now more. So I can say you it's depend on yours, like child needs what he likes to do and what games he prefers to play. Any games, all the games are okay, good, helpful, but I would not say any app, particular app. Uh, there are so many games on YouTube or the games you can see, but it should not go beyond the time limit. Set that time limit, otherwise it will slowly convert in the addictions and obsession. It might a problem later on. So if better go with the physical one, and once in a while some kind of like 10-15 minutes some online games that can be done. Um, there's a question that we have received from a viewer. It talks about the children who are exposed to different languages. So, what happens is they have a multilingual exposure, because of which there can be linguistic confusions. So, how do you think can we help such children deal with the confusions that we are creating in a diverse cultural background these days? Yeah. Initially, if the child is having issue with the language and comprehension, so prefer one language, because in terms of English is quite common among the children and the pupil. Mother tongue, anyways, the child will learn, because our brain is wired with accordingly. The language will come, but reading skills and other things will be need to develop. For the language, different language, if the child is slowly picking up, because child moves in different culture and different people, no, so they pick up different languages, so it's okay, fine, because that's how they learn. They become multilinguistic and all. But if as a parent you feel there is a somewhere some confusion or somewhere some diversity, the learning is not happening, definitely you can consult a psychologist or any professional. Uh,
And the comprehensive, again, the assessment can be done and the consultation can be done and find out if there is any problem. Otherwise, no harm to continue with the diverse language group. So moving on to a very, very delicate topic. Um, when you are a mother of a child who's in his adolescence, he or she is in his adolescence, we always want to broach on certain delicate topics in a very, normalized manner, so as not to startle them. At the same time, make them, aware of the things that we are not very comfortable talking. To put in one single bracket, I'm talking about sex education. So, as a mother of a teenage son, even I have faced this problem. And I have, I had to consult different books to make him aware, to educate him. So, when I move on to this delicate topic, how do you think, Dr. Babita, would you be able to help these children aware and, make them know, make them aware of their bodies in the first place, because they're all growing up, they're growing into a new phase in their life. And at the same time, how do they get to know what touch should they be aware of, whether it's a good touch, it's a bad touch? How do you make a child know all these things and at the same time enable him, empower him to be safe in this world? Yeah. So thank you, Lavanya. You put it such a very important questions in this platform. Like what we do at Dia Foundation, we started one sex education program. And when we say sex education program, those who are high functioning, they get different notion. So it's again the word sex education. So it's very important, we need to define the thing. So that's how we do the personal safety, setting boundaries and the space. These are the things which we use the term under the sex education. So what we do with different kind of modalities we use, like flashcard, story methods, role plays. With those kind of methods we use to deliver and educate these students with regard to sex education, good touch, bad touch, or when they go for the, because as their foundations, after the training they try to place in vocational training and they try to place in different work culture, work setting. So it's very important to understand the maintaining the space and boundaries. So we do a lot of posh act with different role plays, and they understand beautifully. These students understand beautifully in terms of, what is the setting with the role plays. So if you say this is good touch, this is bad touch, don't touch this, don't do this, no, it's directive teaching will not help. So it's very important, we need to use different indirective way, different methods to teach these kind of information to whether it is normal children or the person with a special need. So I think that's all the more important in the modern times for everybody, and all the parents should make use of such techniques specifically to make their children understand. Firstly, because it makes the parent more comfortable, so the children can learn all these things. And secondly, our children are better protected and they can demarcate between a good touch and a bad touch. So thank you, Dr. Babita. I feel you're doing an amazing job, because this is one of the main questions that trouble all the parents equally. Moving on to the next. Yes, yes. Yes, sometimes parents also get confused what to tell, how to educate, whether it is appropriate information to, or right age to tell them. So a lot of worries the parents are having. So since beginning, as the part of, the education, when for learning skills or the body parts, start with different flashcard and stories. The information, when you communicate to these people, they will take beautifully and they will understand and follow in practical life. And this is valid for puberty also. During, you don't have to like wait till puberty. We can do these role plays for this particular age also. Am I right, doctor? Yes, yes, yes. So the next question is, uh, बच्चों युवा और विशेष आवश्यकता वाले परिवारों को स्वीकार करने पर समुदाय को क्या संदेश आप देना चाहेंगी? Any message that you would like to give to the community at large? uh, like, I feel now, like all of us are dependent to each other actually.
Correct. So, person with special need, they are depend on us, and we are also depend on them. We can't survive without, no, like if we see in society, no, helpers like the safai karne wale or your, all people are very important. So, as a हमको कुछ समझना चाहिए कि वो सोसाइटी में विदाउट देम आवर सोसाइटी कैन नॉट ग्रो. बहुत जरूरी है. जैसे आपकी 5 उंगलियां हैं, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं है. हमारी भगवान ने हमें बनाया, हमारी बॉडी को बनाया है, तो हर चीज की बहुत बहुत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इम्पोर्टेंस है. तो वो चीज हमको समझनी है और वही इम्पोर्टेंस उनको भी हमें एक्सेप्ट करनी है और देनी है. देन इट विल बिकम लाइक फुल हैंड. इसी तरीके से दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. इफ वी थिंक इन दैट वे कि अच्छा हमको भी कुछ उनसे बेनिफिट हो सकता है, they also belongs to society, then then I think the parents with the special need will not worry a lot. Abhi there are a lot of like policies and benefits from the government. Mental health act also is revised now, so there are a lot of things is coming up. The thing is very important for the society as a so-called normal person need to think they are also part of society. They are not, we are not along with them. If we want something to move on, they also part of. So that's very important to understand all the people of the society. So beautifully said. It's like, it takes a village to raise a child, but it takes so many children in their different forms and, in their so many differences and uniqueness to make us understand that we are all unique in our own little way. And inclusion doesn't mean inclusion at a workplace or, a school. It means starting with inclusion right from your home. You start it first, you preach it, amongst your peers and amongst, and you practice, and therefore you teach your children to be better inclusive. And I think that's the way, for a better world, I feel. Babita ji, as a parent, if I am looking at different therapies, what recommendation would you like to give me? What recommendation would you like to give parents in general regarding these different techniques that are there? Because at a point of time when you have different techniques, as a parent, as a layman, you do tend to get confused कि मेरे बच्चे के लिए शायद ये अच्छा हो, शायद वो अच्छा हो, या इसका प्रॉन्स ऐसा है, इसका कॉन्स ऐसा है. तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि मेरे बच्चे के लिए ज्यादातर मैं ये थेरेपी यूज करूं कि वो वाले यूज करूं, या इसका कोई बैलेंस? ऑफ कोर्स आपने बताया था कि आपके सेशंस में होते हैं, आप ऐसे केस टू केस बेसिस पे करते हो, लेकिन जनरलाइज्ड बेसिस पे ऐसा कुछ आप रेकमेंड कर सकते हो? हाँ, तो एज अ पेरेंट हमको ये समझना चाहिए कि मेरे बच्चे की क्या नीड है, मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है और क्या उसके स्ट्रेंथ है. अगर हम उसको इतना समझ लेते हैं एज अ पेरेंट कि क्या नीड है, उसके बेसिस पर आप जब साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, आप किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करते हैं, उसके बाद में आप उसके साथ में जब टच में और फॉलो अप में रहते हैं, तो उसके बेसिस पर अगर बच्चे को सपोज बोलने में तकलीफ है, स्पीच की क्लियर कट प्रॉब्लम है, फर्स्ट फोरमोस्ट, तो आपको स्पीच थेरेपी स्टार्ट करनी है. उसके बाद में अगर लगता है कि कहीं बिहेवियर में इश्यूज है, तो आप साइकोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि मस्कुलर में बच्चे को है, कोई असेसमेंट के बाद में आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा. जैसे आप फीवर आता है, जनरल एग्जांपल मैं देना चाहूंगी यहाँ पर, कि फीवर आता है तो आप टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर आपको बोलता है कि अच्छा फीवर है तो हो सकता है आप ये टेस्ट करा लो पहले. 2-3 दिन के बाद भी नहीं आपका फीवर उतरा तो अच्छा आप ये टेस्ट करा लो. तो टेस्ट में आपको पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर इन्फेक्शन है, इसकी वजह से फीवर आया है, या वहां पर पेट में कुछ इन्फेक्शन है उसकी वजह से है, तो आपको कुछ आइडिया लग जाता है टेस्टिंग में. इसी तरीके से साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है, तो वहां पर भी हमको ब्लड टेस्ट नहीं होता है. साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में कुछ टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, उनके बेसिस पर पता चलता है
कि बच्चे को कहाँ पर तकलीफ है। जब वो एरिया आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके बेसिस पर आप फिर डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देता है, अच्छा आपको पेट में तकलीफ है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से फीवर आया तो आप ये मेडिसिन लो, या इन्फेक्शन है आपको कुछ ईयर में या टीथ में, उसकी वजह से आपको फीवर आया तो आप ये मेडिसिन, तो वहां आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, उसी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ में भी है, नीड जब आइडेंटिफाई होगी प्रॉब्लम एरिया, देन यू गो विद द इंटरवेंशन कि कहाँ पर स्पीच का प्रॉब्लम है तो स्पीच यू कैन डिसाइड एंड स्टार्ट। बिहेवियर में इश्यूज है, इमोशन में इश्यूज है, तो स्पीच में कोई इतनी तकलीफ नहीं है तो आप स्पीच को नहीं ले सकते, आप फिर इमोशंस को, बिहेवियर को आपको पहले लेना है, पहले वो थेरेपी स्टार्ट करनी है। बच्चों को कहीं वॉकिंग में है, कुछ ग्रॉस मोटर स्किल्स है, वहां पर प्रॉब्लम है, तो आप एक साइकोथेरेपीज की जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट में, तो वहां पर काफी सारी थेरेपीज, जैसे फाइन मोटर स्किल्स हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स है, काफी कुछ कवर होता है। तो आप कुछ चीजें जो है आप थेरेपिस्ट के साथ में मिलके जब आप एजुकेट हो जाते हैं तो आप उनको घर पे कंटिन्यू कर सकते हैं, आप उन एक्टिविटीज को, क्योंकि आप थेरेपीज के लिए जाएंगे 1 सेशन और 2 सेशन, आप जब वही प्रैक्टिस आप घर में करते हैं तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो बच्चे का डेवलपमेंट फास्ट होता है, बच्चे की जो रिकवरी है वो फास्ट होती है, तो बच्चा का डेवलपमेंटल लेवल अचीव करने का है, वो नेक्स्ट वाला जो है वो फास्टर अचीव करेगा, तो इस तरीके से फास्टर रिकवरी होती शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना पड़ता है, या फिजियोथेरेपी में कुछ मसल्स का है तो आपको वो स्टार्ट करनी है बेस्ड ऑन व्हाट माय चाइल्ड इज नीडेड फॉर द थेरेपीज, एंड देन द प्लान। इफ द चाइल्ड नीड्स एक्चुअली बहुत हाइपर एक्टिव है तो आपके लिए कोई थेरेपी काम नहीं करेगी, पहले आपको नीड टू कंसल्ट द साइकेट्रिस्ट, स्टार्ट विद सम मेडिकेशन एंड स्टार्ट विद साइकोथेरेपी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को लगता है, या एक मिसकंसेप्शन होता है कि बच्चा मेडिसिन लेगा तो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगी, या मेडिसिन ठीक नहीं है, साइकेट्रिक मेडिसिन लेना डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो ये सब चीजें सेकेंडरी है। अब जैसे फीवर है तो मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी आपको फीवर को कम डाउन करने के लिए, अदरवाइज वो आपको और जगह में इफेक्ट करेगा और हाई फीवर हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से अगर बच्चे को कुछ जैसे एग्रेसिव ज्यादा है बच्चा, तो वहां पर मेडिसिन का अपना रोल है, वो ब्रेन में जैसे न्यूरो जिसको हम हार्मोन सेक्रेशन होते हैं उनको चैनलाइज करते हैं, तो और उसके अलोंग विद आप साइकोथेरेपी से स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू विल गेट अ गुड रिजल्ट एंड पॉजिटिव बेनिफिट फॉर योर चाइल्ड और द पर्सन बेसिकली। So, to summarize it, it will basically mean you first identify the need, and then you go and you determine which person you need to go to, and accordingly the prioritization will also take place. कि जो नीड बेसिस पे हम लोग जो आइडेंटिफाई करते हैं इश्यूज, उसका प्रायोरिटाइजेशन भी उसके मुताबिक होगा. So just like how we don't think, and there's a request to everybody, it's like we don't think before going to the doctor, do we? So let's not think too much before going to a psychiatrist or a psychotherapist or a psychologist too, because what happens is when we identify the first step, that's when we can treat it accordingly. तो ये हिचकिचाहट जो हम में होती है, जो एक अदर डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए नहीं रहती, तो ये मेंटल इश्यूज को डील करने के लिए भी नहीं होना चाहिए, भले ही वो हमारे लिए हो, भले ही वो न्यूरो डाइवर्जेंट हो या भले ही न्यूरोटिपिकल हो. आई थिंक इट्स फॉर एवरीबडी, द स्टैंडर्ड रूल इज फॉर एवरीबडी, and it of course varies case by case, child by child, person by person. Dr. Babita, we have another. एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स या सोचते हैं कि अभी छोटा है, थोड़ा देख लेते हैं, बड़े होके थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो इस तरह से जब आप टाइम को पोस्टपोन करते जाते हैं, हिचकिचाहट जैसे आपने भी कहा लवन्या, तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं फिर वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो जब जैसे भी प्रॉब्लम पता चली है, इश्यूज डायग्नोज हुआ है, आप तुरंत जाके प्रोफेशनल्स को मिलिए एंड देन उनके साथ टच में रहिए, डेफिनेटली रिकवरी विल बी फास्टर। So it's better to go on time rather to delay it, and procrastination always leads to disadvantages in the long run. Dr. Babita, we have a question from a viewer.
How can an autistic child be taught to reciprocate faster to a question asked? Is there a particular method or mode of teaching? हाँ, कई बार हम देखते हैं कि जो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, दे आर वेरी डाइवर्स ग्रुप, एक्चुअली बिलोंग्स टू डाइवर्स ग्रुप। तो कुछ कॉमन स्ट्रेटजीज हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको देखते हैं कि चाइल्ड टू चाइल्ड, maybe some strategies might be effective for one children, it might not effective for another children. So the parent need to be little creative, how and little flexible, how you can teach the child in a different way. So there are, like, again, some flashcards are there, some going to the different settings, social settings, step by step. If the child, because in autism there is a difficulty with the mingling and socialization. So if you take the child and go to the mall directly, it's it's a like a flooding situation for the child, and a lot of anxiety and restlessness. So that's again, it's a which we do the behavior modifications, behavior therapy. We'll go in a different, like, graded manner. That it depends the child age and level of difficulty and disability also. So based on that, different modality can be used. So, like, some children are visual learners, some children are auditory. They learn with auditory. So these are the things which we need to understand from my child is what strategy is the best, and how you will come to know. It's only the method. Keep trying. There is no perfect um, statement or a strategy that will work. So you, as a parent, as a therapist, need to keep trying according to the child need, according to the child learning style, in what way he learns. So when you keep trying, slowly the child and the parents skill will develop. Dr. Babita, any message, any ray of hope, and any positive note to end the session with tonight from you? Yeah, I think I would say to all the members, um, I would not say be positive. I say be creative, be mindful, and use the present moment, present situations, present time in the best way. Be part of learning, be part of whatever you are doing. Just enjoy that particular moment. The outcome definitely will happen in a positive way. So, as we come to the close of the session, let me tell you, Dr. Babita, it has been a complete pleasure having you with us tonight. And, if I want to close the session, I would like to also embrace our differences. That's the way we celebrate them and accept the unique from our heart. So, on this note, we come to the end with a pledge. We request all our viewers also to take an oath along with us, because a little change in our behavior and mindfulness, like Dr. Babita says, will go a long way in creating a huge difference. Viewers, kindly note that the link to the video will also be shared here, and you can take the pledge along with us. You can also record your pledge and, send it to us using that link. Babita ji, would you like to take the pledge first? Okay. I'll just see the. I'll go back. Can we do it together? Yeah, yeah. Okay. So I would request everybody to also spare 2 minutes, 2 seconds rather, to take the pledge along with us. I pledge to be inclusive I pledge to be inclusive and accept the unique. and accept the Unique. unit, Unique. Unique. The unique. special, yeah. I Okay. pledge to be inclusive and accept the unique. Okay. I pledge to be inclusive and accept you. Accept the unique. Thank you so much, Babita ji. I'm sure most of our viewers would have taken the pledge also along with us. Let the pledge be something that we all take from our heart and not simply mean it in words. I think that's also more important. And I'm sure that's what all of us are working towards. So we look forward to seeing your videos and your pledges in our link. Please use the link.
And thank you so much, Babita ji, for being a wonderful, wonderful guest tonight. And it was, beautiful learning so many things in this insightful session. Thank you. Thank you, Lavanya, Shivali ji, for inviting me in this platform. So thank you so much.